Work, energy and power. Solution of JEE Mains 2024 physics questions. Question number 1. If a rubber ball falls from a height h and rebounds up to a height h by 2, the percentage loss of total energy of initial system as well as velocity of ball before it strikes the ground respectively are. Ball falls from height h and rebounds up to height h by 2. Initial energy, total energy E1 will be mgh and final energy E2 will be mgh by 2. Loss, percentage loss of energy, H1 E1 minus E2 by E1 into 100%, mgh minus mgh by 2 by mgh into 100, this is 50%. Velocity of ball before it strikes the ground, suppose यहाँ पर velocity is v, initial velocity is 0 and height fall is h. V square is equal to u square plus 2gs, or v square is equal to 0 square plus 2gh, or v is root 2gh. Option 1 is correct. Question number 2. A body of mass m kg slides from rest along the curve of vertical circle from A to B in frictionless path. The velocity of ball at B is. Total fall will be vertical distance between A and B. Suppose this is H. This is center. A से perpendicular. Suppose this radius is C. A से हमने OC पर एक perpendicular draw कर दिया, A1. So H will be OB plus A1, and OB is R, and this A1 will be R sin 45 degree. R 1 plus sin 45 degree. R is given 14. 1 plus 1 by root 2. 14. 1 plus root 2 by 2, or 14. 1 plus 1.4 by 2. This is 14 into 1.7 meter. H. A से B तक H डिस्टेंस, H वर्टिकल हाइट, ये बॉडी जो है डाउन हो जाती है, इसको इट मीन्स देयर इज ए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो B पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज B पर वेलोसिटी इज V. तो लॉस ऑफ PE is equal to gain in kinetic energy.
loss is mgh and gain is half mv square. m से m क्रॉस हो गया. v square is 2gh 2 into 10 into 14 into 1.7 is equal to 476. v is 476 का रूट 21.9 meter per second. This fourth option is correct. Question number 3. Body of mass 50 kg is lifted to a height of 20 meter from the ground in two different ways as shown in the figure. The ratio of work done against gravity in both respectively cases will be. The work done against gravity depends on vertical height. It is directly proportional to vertical height raised. तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो वर्टिकल हाइट रेज्ड है दैट इज 20 मीटर और यहाँ पर भी सेकंड केस में भी 20 मीटर. वर्क डन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H हाइट रेज्ड. जो पाथ मूव्ड पर डिपेंड नहीं कर. वर्क डन only depends on height raised. It does not depend on path followed. So both cases में H is 20 meter, hence work done will be same, hence ratio will be 1:1. Fourth option is correct. Question number 4. A body is moving directionally under the influence of a constant power. Its displacement in time t is proportional to. Power is constant. P, suppose power is equal to some constant k. P होता है m into v is equal to k. F into v, force into velocity. फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. मास एक्सेलरेशन होता है dv by dt v is equal to k और v dv will be k by m dt. बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें. v square by 2 is equal to k by m t और v square is 2k by m into t. v is equal to 2k by m root into t का root. This is also a constant. v को हम dx by dt, v is dx by dt, तो 2k by m into t की पावर हाफ, तो dx is equal to 2k by m t half dt. बोथ साइड अगेन दिस इंटीग्रेशन करें. x is equal to 2k by m under root into t की पावर
half plus 1 upon 3 by 2. Or 2 by 3 2k by m under root into t की power 3 by 2. This is a constant. Hence, x is proportional to t की power 3 by 2. Option number 2 is correct. Question number 5. A bullet of mass 50 gram is fired with a speed of 100 meter per second on a plywood and emerges with 4 meter per second. The percentage loss of kinetic energy is m. Initial kinetic energy will be half m v square, v initial square 2m into 100 का square. Final kinetic energy is half m final velocity का square half m into 40 का square. Percentage loss of kinetic energy k initial minus k final by k initial into 100 half m into 100 का square minus half m into 40 का square by half m into 100 का square into 100%. हाफ m से डिवाइड कर दिया पूरी फिगर को. 100 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 100%. 100 से एक 100 क्रॉस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1. एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, माइनस कर दें बाई 100. 84%. The loss in kinetic energy is 84%. Option 1 is correct. Question number 6. A stationary particle breaks into two parts of masses ma and mb which move with velocity v and vb respectively. The ratio of their kinetic energy kb ratio ka is. The initial linear momentum is 0 क्योंकि particle is stationary. Final momentum Pf will be ma va plus mb vb. For conservation of momentum, Pf will be equal to Pi initial, ma va plus mb vb is equal to 0, or ma va is equal to mb vb minus. Kb is equal to half mb vb square and Ka will be half mb va square. So Kb by Ka will be half mb vb square upon half mb va square, or mb vb by ma va into vb by va. These are both equal,
neglecting minus sign, तो this is VB by VA है, तो KB रेशो KA is equal to VB रेशो VA. Option 1 is correct. Question number 7. A circular table is rotating in with an angular velocity of omega radian per second about its axis. See figure. There is a small groove along the radial direction on the table. A steel ball is gently placed at a distance of 1 meter on the groove. All the surfaces are smooth. If the radius of table is 3 meter, the radial velocity of ball with respect to table at the time ball leaves the table is x root 2 omega meter per second, where the value of x is. This is steel ball. Mass of steel ball suppose m, और इनिशियली अगर ये x डिस्टेंस पर है, जब ये रोटेट करेगी टेबल तो बॉल पर एक स्यूडो फोर्स Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू होगी m इंटू डिस्टेंस इंटू ओमेगा स्क्वायर, mx ओमेगा स्क्वायर. Ball moves outward. X keep increasing, it means Fc is not constant. At this instant, acceleration is Fc by m, or mx omega square by m. X omega square dv by dt is equal to x omega square. और dv by dt को हम लिख सकते हैं dx से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया dy by dx से x ओमेगा स्क्वायर, एंड dx by dt इज v, तो v dv by dx इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर, और v dv इज x omega square dx. Initial velocity is 0 and suppose final velocity here is v1. बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू v1, और डिस्प्लेसमेंट है उसका 1 मीटर इनिशियल एंड फाइनली 3 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. 1 3 x ओमेगा स्क्वायर dx, v स्क्वायर बाई 2 0 v1 ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 1 3. v1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2. 2 से 2 क्रॉस हो गया. v1 स्क्वायर इज
omega square into 9 minus 1 8 omega square. तो V1 is 8 omega square का root 2 root 2 omega, and this velocity is given as x root 2 omega. This is x root 2 omega. both हम कंपेरिजन करते हैं तो x की वैल्यू इज 2, x इज इक्वल टू 2, दिस इज 2. A particle of mass m moves on a straight line with its velocity increasing with distance. According to the equation, v is alpha root x, where alpha is constant. The total work done by all the forces applied on the particle during its distance from x is 0 to xt will be. Work done will be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Kinetic energy is half m v final का square minus half m v initial का square. Half m v final, v is given alpha root x, इसको हम लिख सकते हैं v final is alpha x final, and similarly v initial will be alpha x initial. तो वी एफ के अंडर रूट एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम एल्फा अंडर रूट एक्स इनिशियल का स्क्वायर 1/2 एम एल्फा स्क्वायर एक्स फाइनल माइनस 1/2 एम एल्फा स्क्वायर एक्स इनिशियल 1/2 एम एल्फा स्क्वायर फाइनल x is d minus m alpha square, initially इसकी पोजीशन इज एट 0, तो वर्क डन आ जाएगा m alpha square d by 2. दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. ए फोर्स 3x square plus 2x minus 5 Newton displaces a body from 2 meter to 4 meter. Work done in this by this force is 3x square plus 2x minus 5. तो वर्क डन होगा f dot dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 3x square plus 2x minus 5 dx integration 2 to 4 3x cube by 3 plus 2x square by 2 minus 5x 4 2 to 4 x cube plus x square minus 5x 2 to 4 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 64 प्लस 16 माइनस 20 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 10 60 minus 2 58 joule. The work done will be 58 joule.
Question number 10. Two bodies of mass 4 kg and 25 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of magnitude of their linear momentum is, suppose this is m1 and this is m2. काइनेटिक एनर्जी के और लीनियर मोमेंटम का जो p स्क्वायर अपॉन 2 है, ये रिलेशन होता है। तो फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी अगर हम k1 इज p1 का स्क्वायर अपॉन 2m1 and similarly k2 is p2 square upon 2m2. k1 and k2 are equal, hence p1 square upon 2m1 is p2 square upon 2m2, or p1 square by p2 square is m1 by m2, 4 by 25. p1 by p2 will be 4 by 25 का रूट 2 by 5. तो रेशो होगी 2:5. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. Question number 11. The potential energy function in joule of a particle in the region of space is given 2x square, u is equal to 2x square plus 3yq plus 2z. Here x, y, z are in meter. The magnitude of x component of the force acting in particle at point P 1, 2, 3 meter is. U is 2x square plus 3yq plus 2z. X component of the force will be Fx minus delta U by partial differentiation with respect to x. Delta upon delta x 2x square plus 3y cube plus 2z minus 4x. x की वैल्यू पुट कर दें 1, 4 इंटू 1, 4 माइनस 4 न्यूटन. तो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 12. A block of mass 100 kg slides over a distance of 10 meter on a horizontal surface. If the coefficient of friction between the surfaces is 0.4, then the work done against friction is. M is 100 kg, displacement D is 10 meter and mu is 0.4. इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. mg 100 into 10 1000 न्यूटन. रिएक्शन होगी R, that will be equal to mg 1000 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स सपोजिट डायरेक्शन में अगर इस तरफ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो राइट टू लेफ्ट फ्रिक्शन फोर्स होगी. F इज इक्वल टू म्यू आर और 0.4 इंटू 1000 400 न्यूटन. तो
So work done against friction will be F into D, 400 into D is 10 meter, 4000 joule. Third option is correct. Question number 13. A bob of a pendulum was released from a horizontal position. The length of the pendulum is 10 meter. If it dissipates 10% of its initial energy against air resistance, the speed with which the bob arrives at the lowest point is G is 10 meter per second square. एक बॉब को पॉइंट ओ से एक बॉब लटका है, इसकी लेंथ इज 10 मीटर. इनिशियली इट इज हॉरिजॉन्टल और यहाँ से इसको रिलीज किया जाता है. इसकी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके रेफरेंस में इनिशियल हाइट इज h and h is equal to L is equal to 10 meter. Suppose this position is A and this is B. So potential energy at A with respect to B will be mg h or m into 10 into 10, 100 m joule. Loss of energy %, of 100 m 10 m. तो remaining energy 100 m minus 10 m is equal to 90 m, and this is kinetic energy at B. तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे वेलोसिटी इज v, तो काइनेटिक एनर्जी इज, तो 90 m इज इक्वल टू के ई एट बी हाफ m v स्क्वायर. m से m क्रॉस हो गया, v स्क्वायर इज 90 इंटू 2 180. v is 180 का रूट and this is 6√5 meter per second. 6 root option 1 is correct. Question number 14. A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point A such that it just complete half circle reaching the topmost point. The ratio of kinetic energy Ke at A and Ke at B is. The minimum velocity is provided
टू जस्ट कंप्लीट द हाफ साइकिल, तो यहाँ पर जो VA होता है दैट इज 5GL का रूट और VB होगा GL का रूट। तो काइनेटिक एनर्जी एट A रेशो काइनेटिक एनर्जी एट B will be half mVA का स्क्वायर अपॉन हाफ mVB का स्क्वायर और VA स्क्वायर बाई VB स्क्वायर और VA बाई VB का होल स्क्वायर। दिस इज 5GL रूट अपॉन GL रूट, इसका स्क्वायर, दिस इज 5:1। ऑप्शन 2 is correct. Question number 15. A particle is placed at point A of frictionless track ABC as shown in the figure. It is gently pushed towards right. The speed of particle when it reaches the point B take G is 10 meter per second square. तो हाइट ड्रॉप्ड है, h is 1 minus 0.5 is equal to 0.5 मीटर। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी एट B is V, तो V will be V square U square plus 2GS। V square is 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू H और 2 इंटू 10 इंटू H इज 0.5 10। तो V की वैल्यू हो जाती है 10 रूट मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। A artillery piece of mass m1 fires a piece of mass m2 horizontally. It's instantaneously after the firing, the ratio of kinetic energy of the artillery and that of the cell is। एक आर्टरी इसका मास m1 है और सेल का मास इज m2। सेल की वेलोसिटी सपोज v2 और जब फायर करेंगे तो इसकी वेलोसिटी v1। इनिशियली सिस्टम इज इन रेस्ट, तो पी आई इनिशियल विल बी 0, पी फाइनल होगा m1 v1 प्लस m2 v2 and for conservation of momentum pf is pi, m1 v1 plus m2 v2 will be equal to 0 or m1 v1 will be minus m2 v2 or v1 by v2 will be m2 by m1। माइनस साइन शोज कि जो सेल के अपोजिट डायरेक्शन में आर्टिलरी की वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ KE
artillery upon KE of cell. Half M1 V1 square by half M2 V2 square, or M1 by M2 into V1 by V2 का होल स्क्वायर. हम वैल्यूज पुट कर दें फ्रॉम हियर. M2 by M1 का स्क्वायर, दिस कम्स M2 by M1. जो रेशो होगी M2 by M1, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Question number 17. A body of mass 2 kg begins to move under the action of a time dependent force F. 60 plus 60 I cap plus 60 square j cap. The power developed by the force at the time t is given by. पावर डेवलप्ड होता है F डॉट वेलोसिटी. F is given 60 I cap plus 60 square j cap. एक्सेलरेशन होगा F by m, और m is 2, तो 60 I cap plus 60 square j cap, और 3t I cap plus 3t square j cap. ये होता है dv by dt. दिस इज 3t I plus 3t square j cap. तो dv होगा 3t I cap plus 3t square j cap dt. बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें. dv 0 to v 0 to t 3t I cap plus 3t square j cap dt. v 0 to v, this is 3t square by 2 I cap plus 3t cube by 3 j cap 0 to t. This is v minus 0 is equal to 3t square by 2 I cap plus t cube j cap minus 3 by 2 0 का स्क्वायर I cap minus 3 by 3 0 का क्यूब j cap. तो v आ जाता है 3t square by 2 I cap plus t cube j cap. तो पावर डेवलप्ड होगा F डॉट V. F इज 60 I cap plus 60 square j cap dot product 3 by 2 t square plus t cube j cap I cap 60 into 3 by 2 t square plus 6t square into t cube 9t cube plus 6t की पावर 5. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट.